Now let us see queue implementation as a list. As we know that queue implements FIFO manner, that is first in, first out. So let us create some functions. First function is empty. This will ensure that the queue is empty or not. So we will require an if condition. If queue is double equal to blank list, return true, else return false. Next, insertion of an element in a queue is known as enqueue. So insertion will be taking place from the rear end. So we will have two arguments, a queue and a item. So we will append the item in the queue by writing the statement queue dot append item. If लेंथ ऑफ क्यू इज 1, अगर क्यू के अंदर एक ही एलिमेंट है तब फ्रंट इक्वल टू रियर इक्वल टू 0, तब क्या हो जाएगा, फ्रंट भी है रियर भी है वो 0th इंडेक्स पे होगा। नहीं तो रियर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ क्यू माइनस 1, नहीं तो रियर का जो हमारा वेरिएबल है वो कहाँ होगा, जो भी क्यू की लेंथ है उसमें से एक माइनस कर देंगे हम, वो रियर आ जाएगा। नेक्स्ट, फॉर डिलीटिंग एन एलिमेंट फ्रॉम द क्यू वी हैव अ फंक्शन dequeue. First we will check the queue is empty. If is empty queue return underflow. अगर queue के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है तो underflow रिटर्न हो जाएगा। Else item is equal to queue dot pop 0. अगर एलिमेंट है तो क्या होगा, एलिमेंट वो पॉप हो जाएगा। और कौन से इंडेक्स से एलिमेंट पॉप होगा, 0th में। क्यों, क्योंकि क्यू के अंदर जो डिलीशन है वो फ्रंट से होती है। आपको पता है कि लाइन है, लाइन के अंदर सबसे पहले कौन जाएगा, जो सबसे पहली पोजीशन पे होगा वो सबसे पहले लाइन से बाहर जाएगा। एक कंडीशन और चेक करते हैं, इफ़ लेंथ ऑफ क्यू डबल इक्वल टू 0। अब उसके अंदर अगर एक ही एलिमेंट है, फिर से वही केस, फ्रंट और रियर दैट इज इक्वल टू नन, तो फ्रंट उसमें एब्सेंस ऑफ वैल्यू, ठीक है, तो रिटर्न आइटम, आइटम को रिटर्न कर दीजिए। नेक्स्ट, टू फाइंड आउट द फ्रंट मोस्ट एलिमेंट ऑफ द क्यू वी हैव अ फंक्शन def peak. If is empty queue return underflow, else front is equal to 0 and return queue front. क्यू का फिर फ्रंट एलिमेंट होगा उसको ये रिटर्न कर देगा। नेक्स्ट, टू डिस्प्ले द क्यू वी हैव क्रिएटेड अ फंक्शन डिस्प्ले क्यू। इफ क्यू इज एम्प्टी प्रिंट क्यू एम्प्टी। एलिफ इफ लेंथ ऑफ क्यू इज 1, अगर क्यू के अंदर एक एलिमेंट है प्रिंट क्यू 0, यानी क्यू का फर्स्ट इंडेक्स 0th इंडेक्स पे जो एलिमेंट होगा वो प्रिंट कर दीजिए और उसके साथ ही फ्रंट कॉमा रियर, ठीक है, फ्रंट और रियर जो है वो एक ही जगह पे होगा। एल्स फ्रंट 0 है, रियर आपका लेंथ ऑफ क्यू माइनस 1 हो जाएगा। प्रिंट क्यू फ्रंट एंड फ्रंट और लूप लगा दीजिए फॉर ए इन रेंज 1 कॉमा रियर प्रिंट क्यू ए, यानी क्यू को ये प्रिंट करना शुरू कर देगा, ठीक है, और प्रिंट क्यू रियर रियर, तो रियर को भी ये प्रिंट करता जाएगा। तो फ्रंट और रियर दोनों वैल्यूज़ को प्रिंट करवाने के लिए, उसके मेन जो भी वैल्यूज़ आएंगी उनको प्रिंट करने के लिए फ्रंट आपका फ्रंट पोजीशन दिखाएगा और रियर यहाँ पे रियर पोजीशन आपकी आएगी। सो ये हमने कुछ यूज़र डिफाइंड फंक्शंस क्रिएट किए थे। लेट अस कॉल द फंक्शंस फ्रॉम द मेन प्रोग्राम। वी हैव टेकन अ ब्लैंक क्यू। Initially queue is empty, so front is equal to none, no value, while true,
जब तक कंडीशंस ट्रू रहेगी, ठीक है। प्रिंट क्यू ऑपरेशंस, वी हैव 5 ऑपरेशंस, एनक्यू, डीक्यू, peek, display queue and exit. So 5 choices are there. First choice for input an element, enter the element और enqueue function को कॉल होगा. Second choice to delete an element dequeue, और dequeue में भी हमने यहीं पे दे दिया है कि अगर आइटम आपका क्यू जो है वो पहले से ही खाली है तो क्या होगा, अंडरफ्लो क्यू इज एम्प्टी, नहीं तो एलिमेंट आपका डिलीट हो जाएगा. थर्ड चॉइस के अंदर हमें क्यू का फ्रंट मोस्ट एलिमेंट देखना है, ठीक है. तो आइटम इज इक्वल टू पीक ऑफ क्यू, हमने पीक फंक्शन को कॉल कर लिया है. अब इसमें भी आ गया, अगर आपका आइटम अंडरफ्लो है तो प्रिंट क्यू इज एम्प्टी, अदरवाइज फ्रंट मोस्ट आइटम को वो प्रिंट कर देगी, ठीक है जी. और चॉइस 4 के लिए क्यू को डिस्प्ले करवाएंगे. चॉइस 5 में क्यू जो आपका है वो हम इस प्रोग्राम से बाहर आ जाएंगे, ब्रेक कर देंगे. और बाकी सभी केसेस के लिए एल्स कंडीशन है आपकी इनवैलिड चॉइस. सो लेट अस नाउ रन द प्रोग्राम. You can see here the program is executed. Let us first display the queue. As we know, there is no queue, so it should raise an error. Yes, the queue is empty. Okay, now let us insert some elements inside the queue. So first, that is enqueue, enter the elements for the queue. So we are entering here the elements for a queue. First element is 12. Again let us insert enqueue, element is 14. Again let us insert an element, that is enqueue, that is 16. And till now we have entered 3 elements in a queue, 12, 14 and 16. Let us display the queue. So for display we have the choice 4. So we can see here 12, 14, 16. Front most element is 12 and rear most element is 16. Now if we want to delete an element, that is dequeue an element, the element that is removed will be 12, because in a queue we have a FIFO manner, first in first out. So let us dequeue an element. For dequeue we have a choice 2. Dequeued item is 12. Now let us display the queue. For display we have option 4. You can see here 12 is dequeued from the queue, and now front is 14 and rear is 16. Let us remove another element, that is dequeue. The choice is 2, and now display the queue, option 4. Now you can see here we have only one element, that is front and rear are at the same place. Now let us dequeue again another element, that is the option 2. Now display the queue. You can see here the queue is again empty. So we have seen enqueue and dequeue. Let us again enter some element. Let us this time enter an element 17. Again enter another element, that is 18, and we display the queue. You can see here 17 is front and 18 is rear. Let us use the peek function. For peek we have 3, and it is showing us that the frontmost item is 17. So we have seen enqueue, dequeue, peek and display queue inside a queue. Let us exit from the program. For exit we have the option 5. So this program is similar to stack. Somehow there was push, and in this there is a enqueue, there was pop, there is dequeue and peek. On a stack it gives us the topmost element, here it gives us the
frontmost element. But in stack, we know stack was LIFO, last in first out, but queue is first in first out. So I hope this program is easy to understand. Once you try the program, the things will be automatically clear and understood by you. So happy programming. Thank you.